Hi friends, how are you? Welcome to Kinder Classes. এই ভিডিওরে ଆମେ ପଢ଼ିବା issues of buffer stock and food security. ठीक ଅଛି? ତ first ଆମେ ଦେଖିବା କି what are buffer stocks? Buffer stock କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ buffer stock means ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ କହିବି then ଆମର storage of food जोटा गवर्नमेंट स्टोर करके रखे फूड एमरजेंसी समय जितेबाला कि देश में खाद्य अभाव आसब से समय खाद्यर चाहिदा को पूरण करने गवर्नमेंट किसी गच्छित खाद्य रखे जो गुड़ा कोल्ड स्टोरेज रूम रे रखा जाए ताको ही आम बफर स्टॉक्स बोली कहू डेफिनेशन पढ़ी नवा एठू कि बफर स्टॉक्स रिफर टू ए पूल ऑफ सर्टेन commodities like rice, wheat, etc. which are maintained to provide food security and tackle unforeseen emergencies like drought, famine, wars, etc. In India, the buffer stocks are maintained by public sector. ठीक है जी. Stocking of food grains was first introduced in India in 1969 during the fourth 5-year plan period. ठीक है जी 1969 रे स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स गुड़ा को स्टॉक करिवार जो इन्वेंशन थिला सेटा इन्वेंटेड हेतिला द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा एफसीआई अछि हमर was set up in 1964 under the Food Corporation Act 1964. Then the Food Corporation Act 1964 to achieve the aims of food policy. ठीक है तो जरूरी खाद्य पदार्थ को पब्लिक सेक्टर द्वारा स्टॉक करके गच्छित करके रखा को आम बफर स्टॉक्स बोली कहू ठीक अच्छे देन आर ऑब्जेक्टिव कौन आर मेन एम कौन आर उद्देश्य कौन आम भी जाना द पब्लिक सेक्टर फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक्स इन इंडिया आर मेंटेन विथ 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ठीक अच्छे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची आपनकर बेटर रिटर्न्स फॉर फार्मर्स ठीक है द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP helps the farmers to get rid of distressed sale of their products and ensures them reasonable return for their produce ठीक है फर्स्ट एम है बेटर रिटर्न्स फॉर फार्मर्स मानक MSP प्राइस रे तांको जिनस देवा निमंते आम यही बफर स्टॉक व्यवस्था करथाउ जेपरिक बहुत गुड़ा जगार MSP मिलेनी नॉर्मल मार्केट से बिकिले तांको MSP जदि 20 टंका कि 30 टंका किलो प्रति होइचे ताहले तांको 10 टंका 12 टंका ये टाइप मिले तो सही क्षेत्र में सरकार कौन करते ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे तांको जिनस किणी नियंती आउ ताको निज बफर स्टॉक्स रे निज फूड घर गंता घर स्टॉक करी रखती एमरजेंसी समय पाए ठीक अच्छे ये MSP ही जो फार्मर्स हमर रिवोल्ट होता फार्म बिल कारण से MSP हटे बहुत थिला किंतु से MSP हटु नथला सी अलग जिनस गोटे पूरा वीडियो बनई आपन सेटा देखि पारबे जाई देन सेकंड पॉइंट है फूड सिक्योरिटी the buffer stocks or food grains are maintained to achieve the goal of providing every Indian citizen with sufficient food for their sustenance, that is maintaining food security. buffer stock food grains रखिबार मेन उद्देश्य भी है कि फूड सिक्योरिटी देश में खाद्य अभाव को दूर करवा से ड्राउट टाइम रो फैमाइन टाइम रो अकाल जो पड़ुची कि मरुडी समय युद्ध समय भी बहुत गुड़ा फूड ग्रेन्स रो इंपोर्ट हुए नहीं अन्य देश से भी खाद्य अभाव पड़ी था तो सही समय खाद्य अभाव को दूर करने को आम बफर स्टॉक्स रखी था जोटा कि फूड सिक्योरिटी भी जरूरी ठीक अच्छे देन FCI ग्रेन स्टॉक्स एवं देखिए फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ग्रेन्स केमती अच्छी देखो 2013 रे थिला ये 59.76 मिलियन टन ओके ये डाटा को आप देखो 2019 और 20 अच्छी 56.82 अल्टीमेटली ये ग्रेजुअली बढ़ुनी कि ग्रेजुअली कमुनी मझे बहुत कमी जाइथिला एटा बोधे सबुठ कम आसे हमर 2017-18 रे 37.84 मिलियन रे ठीक अच्छे एबे किंतु धीरे धीरे बढ़ी चली होपफुली एटा हाईएस्ट थिला 2013-14 रे ठीक अच्छे द ऑब्जेक्टिव ऑफ बफर स्टॉक्स फर्दर हमें देखिए प्राइस स्टेबिलिटी भी रहबा दरकार व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड स्टॉक्स
The buffer stocks are released into the market into the bring down the prices to an acceptable level. This was the government tries to keep the food inflation at acceptable levels. ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର କମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ମାର୍କେଟରେ। ତ ଯେପରିକି ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ହିଁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ମାର୍କେଟରେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ ଅଚାନକ ବଢ଼ିଯିବ 150-200 ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତ 150-200 ହେଇଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଟମାଟୋ କିଏ ବି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣି ଖାଇବାର ଲେଭେଲରେ ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସେମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ସେ 50-60 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଟା। ତ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। Then further, the buffer stocks also help the government carry out its social welfare programs for the poor and the unprivileged sections of the population. ठीक ଅଛି, ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କ 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦେଇ ଖାଇପାରିବନି, ତ ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ସ ବହୁତ ଜରୁରୀ। Source of food grains for welfare programs. ठीक है, the food stock procurement helps the government run its social welfare schemes like targeted public distribution (TPDS) and other welfare schemes like midday meal scheme for school going children, distribution of food grains to people displaced due to natural calamities, etc. देखो सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर वेलफेयर प्रोग्राम सच एज ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ଚାଉଳ ଦିଏ, ଡାଲି ଦିଏ, ସେସବୁ ବି ବଫର ଷ୍ଟକ୍ସରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆହାର ମିଳେ ସେସବୁ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ସରୁ ହିଁ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସେ। ଦେନ୍ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଡାଲି ଚାଉଳ ଏସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବଫର ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଆସେ। ତ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଲେଭେଲରେ वेलफेयर स्कीम्स चलाଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆସେ ତାକୁ ବି ବଫର ଷ୍ଟକ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ଲସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଦେନ୍ PDS जो रहा हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इक्वल टू आपण फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया। एटा गोटे कोल्ड स्टोरेज रूम रो एठी धान की गहम कहीं बस्ता रखाई थो। ठीक अच्छे, देन बफर नॉर्म्स कौन तार मिनिमम नॉर्म्स कौन रहा से विषय देखा। Minimum food grains which are central government should maintain at the beginning of each quarter to ensure enough supply for the public distribution system and other distribution schemes of the government. Minimum food grains रहिबार अछि देशर खाद्य पदार्थर जो बफर स्ट्रक्चर माने मानि नियंतु तार जति कैपेसिटी अछि, जेमिति कि धान गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रखियार अछि कि चावल गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रखियार अछि, तो ताले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर रे जति थिबार अछि, कारण जति कि हम टारगेट करिछे 130 crores किंबा 140 crores जनता पाई आमर जो अछंती सिटीजन पाई से हिसाब रे डिफरेंट खाद्य पदार्थ सफिशिएंट परिमाण रे थिबा दरकार। Then food stock available at the central government's pool is the stock held by state government agencies. ठीक है, state government agencies माना पाए stock था states which are taking part in the decentralized procurement schemes and food corporation of India एसब माना पाखे भी था। एसब समाहार रे आपणकर बफर stocks create हुए। The stock of food grains in the central pool is distributed all around the year depending upon the offtake and procurement trends. ठीक है, थ्रू आउट ईयर से प्रोक्योरमेंट कर खरीफ फसल हुए, रवि फसल हुए, से समय प्रोक्योरमेंट हुए। तो यह सब स्टेट गवर्नमेंट किसी थाए, देन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट किसी थाए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पाखे किसी थाए, सब है कि बफर स्टॉक्स क्रिएट हुए। ठीक है, then therefore the season of production and procurement is a major factor to determine the minimum food grain stock required in any particular quarter of the year. As of now, the stocking norms for buffer stock decided by the government of India comprises of operational stocks, that stock required to meet the monthly requirement under TPDS and OTFS.
ठीक अच्छे ऑपरेशनल स्टॉक्स कौन जोटा कि एबे आपणकर खाद्य पदार्थ मिड डे मील दरकार अंगनवाड़ी को दरकार डिफरेंट डिफरेंट एरिया को जो ऑपरेशन स्कीम्स गुडार ऑपरेशनल जो स्टॉक्स दरकार से ऑपरेशनल स्टॉक्स गोटे रहा देन फूड सिक्योरिटी स्टॉक्स गोटे रहा दैट इज जस्ट टू मीट द प्रोक्योरमेंट शॉर्टफॉल ठीक अच्छे फूड सिक्योरिटी गोटे रहा दरकार से प्रोक्योरमेंट शॉर्टफॉल को आमर मीट करने जो रहा फूड सिक्योरिटी स्टॉक्स गोटे रहा द फूड ग्रेन्स फॉर द इशू अंडर OWS TPDS आर कंसिडर्ड एज द ऑपरेशनल स्टॉक whereas the surplus is considered as the buffer stock and operational stock both ठीक अच्छे एबे आपणकर फूड सिक्योरिटी स्टॉक्स और ऑपरेशनल स्टॉक्स दीटा मिसैकी हुए आपण बफर स्टॉक्स ठीक अच्छे then the stock which is over minimum stockpiling norms is treated as excess stock and is exported from time to time जो एक्स्ट्रा स्टॉक जो हो जाए जिते आम ऑपरेशनल स्टॉक्स भी हो जाए और फूड सिक्योरिटी स्टॉक्स भी हो जाए जो एक्स्ट्रा स्टॉकटा आम हुए ताको आम एक्सपोर्ट कर दो ठीक अच्छे एक्स्ट्रा अलोकेशंस फॉर सम स्टेट्स थ्रू ओपन मार्केट सेल्स ठीक अच्छे ओपन मार्केट सेल्स रे से गुडा को स्टेट्स माने भी बिक्री करते देन फर्दर से एक्सपोर्ट हो जाए बाहर देश को then challenges कौन रहा हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखो हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रही कारण चाषी मैंने निजर जिनस पत्र को प्रॉपर्ली बिकी पारती प्रॉपर मार्केट रे कारण लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन रे बहुत पैसा खर्च हो जाए with the majority of funds are allocated for buying the buffer stocks it becomes troublesome for the agricultural ministry and FCI to adjust a budget to make funds available for the efficient establishment and working of the shortage units. This can be seen in the following ways. Government भी प्रत्येक चाषी पाखु जाकि से सब किणवार ताको असुविधा हुए कारण बहुत चैलेंजेस रही जमीक कि लॉजिस्टिक्स बेपार ना एडमिनिस्ट्रेशन बेपार ना कोल्ड स्टोरेज अवेलेबिलिटी ना देखो डुअल वेस्टेज गोटे पॉइंट है आप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड स्टॉक्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू अनसाइंटिफिक स्टोरेज मेथड्स एट द सेम टाइम एट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डाइंग हंगर ऑफ इंडिया देखो डुअल वेस्टेज कौन हुए कि लोक खाଇବା मिलूनी देन आप कोल्ड स्टोरेज ना लॉजिस्टिक्स ठीक से अवेलेबिलिटी ना से आप खाद्य पदार्थ भी नष्ट हो प्लस लोक भी खाद्य माने भोक उपास मरी जाउछन्ती देन वेयर हाउसिंग इश्यूज कौन रहा लैक ऑफ सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस एंड अदर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ठीक अच्छे गवर्नमेंट किणी तो दूसरी जिनस पत्र कि रखा निमंते कोल्ड स्टोरेज जिनस ना प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी ना स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ना से भी लॉस हो वेयर हाउसिंग इश्यू से then wastage होची open and outdoor storage for the food grains are often spoiled by rodents frost and rain causing a huge financial loss for the government okay एबे वेस्टेज होची आपनकर नेलाट समय वर्षा हेगले वेस्टेज हो देन पचिज कले वेस्टेज हो देन से सब रे आपनकर ट्रांसपोर्टेशन रे लॉजिस्टिक्स रे सब रे लॉस हो पारे कारण से बेसी समय नहीं कोल्ड स्टोरेज रखिले ही सेटा बेसी दिन रहा ना जब बाहर नॉर्मल टेम्परेचर रहा से जल्दी कट हो देन ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज जोटा मुझे कहली द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्रेन्स टू and from the FCI godowns each use देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन्स पाखे नहंती से गुड़ा बहुत बड़ बड़ अर्बन टाउन्स गुड़ा अच्छी अर्बन एरिया अच्छी तो से गुड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं आ जाए से गुड़ा बहुत हाई कॉस्टली हो जाए ठीक अच्छे देन स्पिलिंग एंड स्पॉइलेज एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आल्सो इंक्रीज द लॉसेस ठीक अच्छे स्पॉइल भी हो जिनस गुड़ा ट्रांसपोर्टेशन बेस समय लगे से तार फाइनेंशियल लॉस हुए then diversion and pilferage the buffer stocks are sometimes diverted to the black markets liquor manufacturing units ghost beneficiaries this way instead of the targeted population other benefits from the buffer stocks of food grains starving a great percentage of population एगुड़ारे हेराफेरी जो हुए डाइवर्सन हो जाए जन लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा जो ब्लैक मार्केट्स को बिकी दिखती घोस्ट बेनिफिशियरीज मैंने बेनिफिशियरी जो मैंने एक्जिस्ट नुहति से बिका हो जाए तो से सब भी बहुत लॉस हुए देन ट्रेड डिस्टोर्शन प्रैक्टिस मेनी डेवलप्ड कंट्रीज
Countries of the West consider the government procurement of food grains and maintenance of the buffer stocks as a trade distortion practice that drag India to WTO regarding this same. ठीक अच्छे तो बहुत वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं कि इंडिया रू सेगुड़ा बफर स्टॉक्स न रखी सेगुड़ा ट्रेड रे से एक्सपोर्ट कर दिया जाऊ तो सेटा ପାଇଁ WTO जोटा कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अच्छी एठी देखंतु वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन WTO ताको ସେମାନେ କୁହନ୍ତି कि इंडिया को ड्रैग कर सो दैट से बफर स्टॉक्स रे स्टोरेज न रखी एक्सपोर्ट कर दो. Then skewed cropping pattern. Okay, integration of buffer stocks with MSP for the food grains, rice, and wheat leads to excessive production of these food grains. These are water-intensive crops and need greater application of fertilizer and great productivity. This not only affect the environment but also affects the crop diversity, comprising the nutritional security of India. Farmers belonging to regions not favorable for the production of rice and wheat also have an inclination of going rice and wheat. देखो आउ गोटे प्रोब्लेम कौन है कि लोकों को डिफरेंट टाइप्स रो वेराइटीज प्रोडक्शन न नहीं बेसिकली अधिकांश फार्मर कौन करते ना राइस और व्हीट प्रोडक्शन ऊपर बेसी ध्यान दियंती ध्यान देवार मेन रिजन है फसल नष्ट होवार मेन रिजन है कि धान और गहम बेसी आप पानी भी दरकार हुए तो से बेसिकली रेन फेड वाटर उपरे रेन फेड आपणर हार्वेस्टिंग जोटा कह प्रोडक्शन जोटा कह एग्रीकल्चर सेट उपर डिपेंडेंट हो जाए जदि वर्षा है तो ठीक अच्छे वर्षा अधिक है तथापि से गोटा नष्ट हो जाए तो अन्य डिफरेंट जिनस से ध्यान दिखते सेटापी इंडिया रे बहुत माल न्यूट्रिशन अच्छी बहुत जिनस आप काप्स खाईदे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए श्वेत सार जातीय खाद्य मिल जाए कि पुष्टिसार जातीय खाद्य मिलूना तो से सब को इंडिया रे फार्मर मान को मिलित भाव में जानवर अच्छी कि फूड सिक्योरिटी कौन फूड को हिसाब से प्रोक्योर करार अच्छे जमीक फर द टाइमिंग से बहुत थर कौन हुए मार्केट गोटे जिनसर आलू मानि ना 2 टंका 3 टंका पर केजी मिलूँ आउ अन्य जिनस जोगुटा कि प्रोडक्शन ही नथिबो से गुटा बहुत 20 30 30 50 60 टंका 200 टंका मिलूँ तो से सब जिनस को बराबर भाव में सांगे प्रोडक्शन करते ताले सब जिनस गोटे मिनिमम प्राइस फिक्स होइकी रहंता सब जिनसर खाद्य पदार्थ आसिकी देशर खाद्य चाहिदा को पूर्ण कर पारंते और से हिसाब रे गोटे वेल मैनर्ड रे क्रॉपिंग करया को पड़ियो एई स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न रे खाली धान और गहम प्रोडक्शन कले हबनी ठीक अच्छे. Then challenges how can रहा open-ended procurement in the absence of proper estimation of the overall buffer stock estimation for running of PDS and emergency. The open-ended procurement of the food stocks for the possesses challenges to proper storage and outtake of buffer stocks. ठीक अच्छे. open-ended procurement कौन रहा अपना कि दोनों एबे फार्मर माने इधर मार्केट बिकी पारे ना तो MSP रे गवर्नमेंट को बिकी पारे को जगह MSP मिलूँ को जगह MSP मिलूनी को जगह FCI रे लोक निजे आपणकर हो जाती निज कौन कह जाए पैसा खाई निजे करप्शन प्रैक्टिस रे एंगेज रही किणवा को मना कर दिखते तो ये सब जिनस बहुत गुड़ा से टाइप रो हुए तो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट न करिकी फार्मर मान को कहवा दरकार कि से गोटे पर्टिकुलर जगार बिक्री करंतु सबुआड़ न किणतु कारण FCI रो ऑफिसर माने कौन करेंगे ना मार्केट रो उठेबे जो पर्टिकुलरली चाषी सी ताठू न उठेबेनी तो एमिति भी बहुत करप्शन हुए तो देखो यहाँ गोटे डायग्राम अच्छी कि डॉट धरला मरुड़ी धरला देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स घटीगला देन स्टोरेज ऑफ फूड जोटा रहा देन प्राइजेस तार कौन है बढ़ीगला सम पीपल कैनॉट अफोर्ड टू बाय फूड इनसिक्योरिटी ठीक अच्छे ड्राउट होगा लोकंर खाद्य पदार्थ कम है देन प्राइस बढ़ीगला तो जी महंगा पीपल जो माने कॉमन लोक से खाद्य पदार्थ किणी पारे फूड इनसिक्योरिटी होगा तो ये सब भी चैलेंजेस रहा देन वे हेड आम फर्दर कौन कर The government had set up a 6-member Santa Kumar committee to suggest a restructuring of unbundling of FCI to improve its financial management and operational efficiency in procurement, storage, and distribution of food grains.
Important recommendations made are as follows: reduce the number of beneficiaries under National Food Security Act from 67 to 40%. ठीक अच्छे allow the private sector to procure and store food grains. Private sector मानक दियागला शांता कुमार कमिटी थ्रू रे ସେମାନେ ବି ରଖିପାରିବେ ଖାଲି ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ କିଣିପାରିବନି stock bonuses or minimum support price paid by the states to farmers and adopt a direct benefit transfer system so that MSP and food subsidy amounts can be directly transferred to the accounts of farmers and food security beneficiaries. ठीक अच्छे MSP रे बोनस देवार समय मना कर देइछन्ती सेथिपई डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जोटा अछि डीबीटी से थ्रू रे से पैसा देकी सेथरे ही आपनकर बोनस किंबा सब्सिडी देवा पे से प्लान करछन्ती. Then reduce the number of beneficiaries under the National Food Security 67% to 47%, 40% को नहीं किया आछन्ती संथा कुमार कमेटी थ्रू रे. Then FCI should involve itself in full-fledged grain procurement only to use states which are poor in procurement. In the case of those states which are performing well like Haryana, Punjab, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, the states should not do procurement. ठीक अच्छे मैंने procurement better अच्छन जो मनों को MSP ठीक ठाक रेट मिल जाओ FCI से ठीक इंटरफेयर ना करे कि अन्य देश गुड़ा पछ रेट जो मन देश अच्छन्ती सेठी काम करवे FCI को न्याय दरकार. Abolishing levy rice. Under the levy rice policy, the government buys certain percentage of rice varies from 25 to 75% in states from the mills compulsorily, which is called levy rice. Mills are allowed to sell only the remainder in the open market. सेगुड़ाकू लिवाई राइस बाइंग को बंद कर अच्छी कारण 75% 25 to 75% यदि गवर्नमेंट किणदेला बाकी जो गुड़ा बिका होची से गुड़ा स्टेट रो फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट कर स्टेट रो फूड चाहिदा को से ठीक ठाक फुलफिल कर पारना. Then deregulate the fertilizer sector and provide cash for the fertilizer subsidy rupees 7,000 per hectare to farmers. Subsidy दवा को सामने भी कहते कि rupees 7,000 per hectare to farmers. ठीक अच्छे. Then PDS केमिति काम करे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोटा अछि अपना फार्मर और प्रोड्यूसर से करंती तमने ग्रेन्स दियंती फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंटेन तब फर्स्ट ताको बिकंते से MSP थ्रू रे पैसा नियंती. ठीक अच्छे MSP दियंती मिनिमम सपोर्ट प्राइस देन ग्रेन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाए. देन एटू एलोकेटेड ग्रेन्स चाहे स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स को जाए. देन सेंट्रल इशू प्राइस जोटा CIP से मिले FCI को. Then एमाने कहाँ करंती फेयर प्राइसेस ऑफ्स एमाने दियंती डिस्ट्रीब्यूटर ग्रेन्स करंती दियंती. देन CIP नियंती सेंट्रल इशू प्राइस नियंती. ठीक अच्छे ए टाइप रो PDS चले. Then further we had gone outsourcing of stocking grains. The committee calls for a setting of negotiable warehouse receipt NWR negotiable warehouse receipt. In the system, farmers can deposit their produce in these registered warehouses and get 80% of from banking their produce on the basis of MSP. ठीक है warehouse एक register करके advance रे नहीं समय further काम करे पर MSP रे clear transparent liquidation policy पर first FCI should be given greater flexibility to business to upload surplus stock in the open market or export as per need. ठीक है open market को समाने export ना करे की समाने flexibility मिलेगा दरकार सेटा चाची ऊपर सेटा ऐसी FCI बिजनेस करे ताको बेसी flexibility मिलेगा दरकार. देन एटा रहता ऑपरेशन बचत रहला आपनकर